Bhajan Sangeeta 28, Psalm 28. The heading goes like this: The Lord is my strength and my shield. Psalm 28, Psalm of David. To you, O Lord, I call, my rock, be not deaf to me, lest if you be silent to me, I became like those who down to the pit. So, reading the first verse itself, you can make a short note in your Bible. This is a personal psalm or this is an public psalm, public prayer or a personal prayer. How you can identify? So this is a psalm of David. It is a personal psalm. It is a heartfelt plea for divine mercy and justice, and the psalmist is King David. It stands as a profound expression of trust in God amidst distress and opposition. The psalmist cry for help transition into a confident declaration of faith and thanksgiving. So, in the beginning, it begins with a tune. We can see it is in a tune of a plea or a lamentation or a cry. But in the end, as usually every psalm of David ends with word of confidence and thanksgiving. In the same way, this psalm also ends with the same tune. Read verse 8 and 9. The Lord is the strength of his people. He is saving refuge in his anointed. O save your people and bless your heritage. Be their shepherd and carry them forever. So it ends with the word of confidence. जैसा अंध होता है, एक कॉन्फिडेंस एक अच्छा आशा में भजन संगीत अंध होता है. बाकी जो भजन संगीत है दाऊद ने लिखा था सेम ट्यूनिंग में, मतलब रोते हुए शुरू किया, खुशी के साथ, हिम्मत के साथ समाप्त किया. तो मतलब धन्यवाद के साथ समाप्त किया. दिस psalm belongs to the genre of individual lament. What is meant by genre? So what is the genre of Psalm number 28? Which style it is? Individual lament. What is meant by lament? A common form in the Psalter where the psalmist petitions God for deliverance from enemies or personal affliction. Psalm number 28 not only reveals David's personal faith but also serves as a theological reflection on God's justice, mercy, covenant and faithful. So it is not only a prayer that belongs to David, it is not only a personal prayer, it also has some theological concept like God's justice, God's mercy and that covenantal faithfulness of God. So authorship, as it is written in the heading, it belongs to David. The historical context in the introduction part itself we already read. It may be during the time of adversity or time of hardship in the life of David, and it directly points to 2 points, maybe during the name of Saul or during the name of Absalom. So historical context, 1 Samuel 19 to 26 में भी पहला Samuel अध्याय 19 से लेकर 26 का अंदर कहानी होगा, that is all about Saul and David. Then maybe Absalom's rebellion against David, that is 2 Samuel chapter 15 to 18. Both events involved betrayal, fear and need of divine intervention. दाऊद का जीवन में शाऊल का या अब्शलोम का, during the name of Absalom's time or Shaul's time. In both sense, there was a time of betrayal, there was a time of fear, and David prayed for divine intervention in that context or in his trouble or in his situation. So in both sense, it is same. The psalm tune of desperation and reference. The psalm tune of desperation and its reference to wicked and workers of evil, verse 3, align with these experiences. So when you read verse 3, you can understand there are some enemies who is opposing, who is making him to worry or to be fearful. That is written in verse 3. Do not drag me of the wicked with the workers of evil who speak peace. So by reading this psalm, we can easily understand there is something bad that is happening in the life of David, and it directly points to 2 things, Absalom या Shaul. 1 Samuel chapter 19 or 2 Samuel chapter 15 onwards. And in both sense, fear
and fear, betrayal, and there was a prayer for God divine intervention. परमेश्वर आप मेरा इस संदर्भ में कुछ इंटरवेंशन करना या इस समस्या को आपने बदल के देना, ऐसा वाला एक प्रार्थना दोनों सिचुएशन में था दाऊद के जीवन में. सो लिटरेरी स्ट्रक्चर और डिविजन, वर्सेस 1 to 2, a cry for mercy. Verses 1 to 2, there is a cry for mercy. Verses 3 to 5, petition against the wicked. I have already mentioned the context of the word petition in the psalm. Petition against the wicked. Verses 6 to 9, again thanksgiving and confidence. So it starts with cry, it ends with confidence. C to C. Start with cry, CRY, ends with confidence. So you can see 3C if you want to make it in a make it as a sermon. 3C, first one cry, second one complain, third one confident. समझ आया? 3C. So what are the literary devices used in this psalm? Parallelism, imagery, metaphor, repetition. I think no need to explain. In the exam I will ask all these literary devices. You have to write the heading with one example. समझ आया? What is mean by parallelism? Definition लिखना, एक example लिखना. What is mean by parallelism? If you don't know, again go and see in your old notes. Hear the voice of my supplication when I cry to you, when I lift up my hands toward you, holy sanctuary. Expresses the same idea in two parallel lines. और वचन पढ़ के देखना, मतलब पैरेललिज्म है, पहला वचन दूसरा वचन या एक ही वचन का पहला भाग दूसरा भाग सेम टू सेम मीनिंग है, लेकिन अलग अलग शब्दों में लिखा होगा. So no need to explain. So these are the literary devices: parallelism, imagery, metaphor, repetition. Repetition, you know, hear, cry, bless. Some words are repeatedly happened or repeatedly it is there in the psalm. Theological themes. First one, dependence on God. Dependence on God. How we can identify the first portion or the first division as dependence on God? He is crying to God. In that cry, in that prayer, you can see he is dependent upon God. That's why in this difficult situation, he is asking God to intervene and do something. So second one, divine justice. When the wicked are making him to suffer, or wicked people are oppressing him or doing something wrong, he is asking to God, I need a divine justice in this matter. Verse 4, the sanctuary of God's presence. And verse 2 also you can see, it speaks about pit. And there is one more topic in this Bible, that is परमेश्वर का हुजूरी पर उन्होंने जीने के लिए चाहता है, क्योंकि वहाँ किसी कमी नहीं होगा. And you can see some kind of connection with Psalm number 23 in the last verse of Psalm number 28. Be their shepherd and carry them forever. Connected with Psalm number 23, where the psalmist David says by himself, who is my shepherd? I lack nothing. And one more thing we can notice here, carry them forever. It starts with I, me, my, personal pronouns. It ends with plural. So can we say that it is fully a personal or individual lament, or there is some relation with the nation? So it has two views. You can easily explain in a grammatical way. In a grammatical construction, you find out singular form also there, plural form also there. So maybe David personally, he was going through some kind of suffering or persecution. At the same time, as a nation, when they gone through a kind of suffering, they sang or they prayed this song. So 95%
individual layman, remaining 5% maybe as a nation when they're going through crisis. This psalm कौन लिखा? How can you say all these things, Michu? You have to see the wording. Starts with I, me, then we again I, my, I शुरू होकर नीचे आते आते them. So दाऊद का पर्सनल जीवन के बारे में होगा. If not, do not, थोड़ा आगे बैठो और your chair is touching on that wall. So it ends with the plural them. So we can even give the explanation. Maybe as a nation when they gone through crisis, they prayed. समझ आया नहीं आया? Point number 4. Transition from lament to praise. There is a transformation. एक बदलावट है पुकार से, विलाप से स्तुति तक, धन्यवाद करने का समय तक. So संदर्भ था पहले विलाप, उसके बाद संदर्भ कैसे बदल गया? स्तुति करने का. God has strength and shepherd, verses 7 to 9, where David portrays or David says that he is my shepherd, and he is saying, even asking to God, be their shepherd and carry them forever. उन लोगों के लिए भी आप चरवाहा बनना, उन लोगों को हर दिन हर समय के लिए उन लोगों को भी आपने लेके चलना. लास्ट वाला वचन पढ़िए. Oh, save your people and bless your habitat. Be their shepherd and carry them forever. इन हिंदी. हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निष्पाप के लोगों को आशीष दे. So David as a king, he might be prayed for the entire nation. ऐसे समझ आता है ना वचन पढ़ने के समय. एक किंग, एक राजा होने के नाते पूरा नेशन के लिए, पूरा देश के लिए प्रार्थना कर रहा है. ऐसा है नहीं बाइबल में? So linguistic and textual analysis, you can take some words like here, pit, then workers of evil, dragged away. So for example, one word I will say, it speaks about pit, verse 1 का लास्ट वाला पार्ट. So वो पिट करके शब्द को शायद उतना गहरा है उनका सफरिंग करके समझाने के लिए ऐसा वाला शब्दों को उपयोग करता है. कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैं नरक में हूँ ऐसा लगता है करके. इसका मतलब ऐसा नहीं है सच में हम नरक में हैं. हम ऐसा शब्द को यूज करता है, हमारा दर्द कितना गहरा है लोगों को समझाने के लिए. समझ आया? सो इन लिंग्विस्टिक एंड टेक्सचुअल एनालिसिस आप प्रचार करने के समय कोई वचन लेकर, कोई शब्द को लेकर उसका एक्सप्लेनेशन है ना. उदाहरण मैंने बोला पिट और हियर इन वर्स 1 carries connotation for attentive listening and respond, implying not just auditory perception but active engagement. किसी को बुलाकर अच्छा से सुनो करके बोला तो इसका मतलब सिर्फ सुन के जाने का नहीं, सुनकर समझकर वहां क्या जरूरत है करने के लिए भी वो एक ही शब्द का अंदर मतलब ही है. एंड व्हेन यू से मेरे बातें सुनो, कब ऐसा वाला बातें हम बोलता है? संदर्भ, हमारा बीच में जो संदर्भ. किसी ने देख के भी साइलेंट है तो हम ऐसा वाला शब्द यूज करते हैं, थोड़ा सुनो, सुनने के बाद. या किसी ने बिना सुन के निर्णय लिया तो भी हम बताते हैं ना. सो हियर व्हेन यू रीड दिस साम नंबर 28, कैसा वाला सिचुएशन है? क्योंकि अध्याय वचन 1 में एक सिचुएशन उन्होंने लिखा है, पढ़ के देखिए वो सिचुएशन क्या है, समझ आएगा. ऐसा वाला एक भजन संगीत हम पहले भी पढ़ा था. वर्स 1. हे यहोवा, मैं तुझे पुकारूंगा. हे मेरी चट्टान, मेरी सुन, अनसुनी न. ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हूँ. इन दैट सिचुएशन, इन दैट वर्स, परमेश्वर और दाऊद के बीच में क्या चल रहा है? वो कैसे, क्या महसूस कर रहा है परमेश्वर से?
Huh? Where it is written? Sorrow is not be not there to me. Point number 1. Second, And deaf means अनसुनी. मैं इतना सताव में से जा रहा हूं, इतना पुकार रहा हूं, परमेश्वर आप सुनता नहीं है क्या? इसलिए सेकंड बोला, इफ यू बी साइलेंट टू मी, अगर आप ऐसे ही चुपचाप है तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं ऐसा हो जाऊंगा, आई बिकेम लाइक दोस हु गो डाउन टू द पिट. और मरा हुआ इंसान के समय में सो परमेश्वर का रेस्पॉन्स कैसे था? ये भजन संगीत की शुरुआत में दाऊद के जीवन में, he was deaf to him, he was very silent. इसलिए दूसरा वचन में बोला, hear the voice of my pleas for, hear the voice मतलब और डेफ नहीं होना मेरी इस आवाज के सामने, सुनना. और आगे क्या लिखा? When I cry to you for help, when I lift up my hands toward your most holy sanctuary. सब भजन संगीत पढ़ने का समय दाऊद का अनुभव और उनका और परमेश्वर के बीच में कॉन्टेक्स्ट क्या है समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब. इसमें वर्ब ही है ना. किसी ने साइलेंट रहना क्या है? सो ऐसा वाला वचन को लेकर यू हैव, शब्दों को लेकर यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्टेक्स्ट. देन Psalm number 28 in the context of the Psalter, वही मैंने अभी बताया. भजन संगीतकार सॉल्टर का लेखक का संदर्भ में इस भजन संगीत क्या था? Psalm 28 is part of book number 1 of the Psalter 1 to 41, which predominantly features Davidic psalm. This section emphasizes themes of personal piety, divine kingship, and covenantal faithfulness. Psalm 28 follows Psalm number 27. So Psalm number 27 is connected with Psalm number 28. So read Psalm number 27 verse 1, 28 verse 1. दोनों का ट्यूनिंग सेम है. the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I fear? So in both verse 1 and 1, उन्होंने उनका पूरा डिपेंडेंस, he kept all his confidence and भरोसा and all his trust in the Lord. So he is telling, he is publicly saying, who is my Lord and who is my light and whom I should fear. Coming to 28 verse 1, again he is saying, मतलब प्रार्थना किया होगा 27 में, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुना, कोई उत्तर नहीं मिला. Again he starts with a new introduction in Psalm number 28. Read, to you, O Lord, I अभी ऐसा समझ के देखना, Psalm number 28 में 27 में एक बड़ा प्रार्थना किया, उनको ऐसा महसूस हो रहा है परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं, फिर भी अरे मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे प्रार्थना, ऐसे शुरू किया ना. पढ़ के देखना 28 का पहले वचन to you, O Lord, इन हिंदी. I call. हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तुझसे पुकारूंगा, हे मेरे चट्टान. कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ कैसे समझ आया? हाउ द psalmist felt when he prayed. Most probably in this way only. इतना बड़ा प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर साइलेंट था. So he felt like God is deaf to me and he is silent. And he is saying, if you are keeping this silence for longer time, I will like him that like the other people who went into the pit. समझ आया? Use in worship in lit, हाँ? सर 27 का 7 में भी लिखा है ना, क्या लिखा? जुड़ता है. हे यहोवा, मेरा शब्द सुन में पुकार. Yes. So 28 का 27 का 7 में भी सेम काइंड ऑफ ट्यूनिंग है. Use in worship and liturgy. As we always say that when we go through time of adversity, crisis, you can take this psalm, you can preach by saying, but you can even say that when God is silent, do not think that He is silent forever. He is deaf to you. He is preparing something. So that is what the confidence you can see in the end part. Read 28 ka 6. Blessed be the Lord, for He has heard the voice of my prayers for mercy. 7. The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exults, and with my song
I give thanks to him. So his personal matter he spoke very well. And coming verses it speaks about just like आप मेरा चरवाहा है, उन लोगों के लिए भी चरवाहा, उन लोगों के लिए चरवाहा बनना, उन लोगों को चलाना, ऐसे प्रार्थना समाप्त होते हैं ना. So where the personal prayer ends, you can see in verse 7. Why? Because he is saying that the Lord is my strength and my shield. उसके बाद verse 8, the Lord is the strength of his people. So personally वो जो बात है verse 7 में खत्म हो गया. 8 and 9 points to the nation. समझ आया नहीं आया? So in Jewish tradition they used to take this psalm and they used to sing daily prayer, especially during the time of distress. कोई मुसीबत ऐसा वाला समय में इस भजन संगीतों को लेकर हर दिन प्रार्थना में वो लोग इस्तेमाल करता है. Then the psalm concluding verses 8 to 9 have been particularly influential in Christian theology, where his anointed is interpreted as a messianic reference to Christ. So why? Because where you can see there is one word, he is the saving refuge of his anointed. So कभी कभी ये शब्द को लेकर हम मैसेया में कनेक्ट करके बताते हैं, क्योंकि मैसेया करके क्राइस्ट क्रिस्टोस करके मीनिंग क्या है? अनॉइंटेड वन. Comparative analysis. You can compare Psalm number 28 with 26, 27, 30 and 35. इस भजन संगीतों कितना भजन संगीत के साथ आप लोग तुलना करके प्रचार कर सकता है. क्लोज रेफरेंस. कभी कभी आपका बाइबल में दिखाई देता है CF करके, कभी देखा? इसमें नहीं है, शायद ये NIV बाइबल में होगा. CF इसका मतलब है क्लोज रेफरेंस, मतलब वो वचन की करीब सेम टू सेम मीनिंग देने वाला दूसरे वचन. वो पंकज को मैंने एक बाइबल दिया था, उसका बीच में एक होता है ना, वहां लिखा है CF करके. वो दो लैंग्वेज का एक बाइबल दिया था उसमें. So you can compare Psalm number 28 with 26, 27, 30 and 35. In Christian tradition, we used to take this psalm and we used to explain the importance of prayer, importance of trust in God's covenant, and importance of lamentation, and importance of getting reward according to our deeds. So क्रिश्चियन ट्रेडिशन में हम लोग इस भजन संगीत को लेकर प्रार्थना का उपयोग क्या है, प्रार्थना का इंपॉर्टेंस क्या है बताने के लिए यूज कर सकता है, और अपना अपना काम के अनुसार हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, ऐसा वाला बातें समझाने के लिए इस भजन संगीत का उपयोग कर सकता है. एंड दिस सॉन्ग इन मॉडर्न वर्ल्ड और प्रेजेंट, आज का बात में बताया तो एज अ कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियन, पूरा एक मसीह झुंड में कुछ समस्या हुआ था. हम इस भजन संगीत लेकर जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, शुरुआत में पर्सनल बातें बोल के शुरू करके पर्सनली ही गॉट द आंसर एंड ही सेइंग द सेम वे बाकी लोगों को भी आप मदद करना, उन लोगों को चलाना. सो एज ए Christian community, when we go through crisis, kind of difficult situation, you can take this psalm and preach, and you can preach about the importance of prayer, importance of suffering, importance of trust in God, importance of kingship, and you can say even though it started with the sea cry, it also has the point of complaints, but it ends with words of confidence. 3 C's. You can take these 3 C's into any psalm of David and you can preach. Cry, complain and confidence. Conclusion. ऊपर दिए हुए सारे बातों को जोड़ते हुए कंक्लूजन लिखा है. So any doubt from Psalm number 28 you can ask now. Any doubt from Psalm number 28?